Hello everyone. So today we are going to see how to launch any browser in our Playwright automation tool. So before that, generally what people feel like whenever they create a project or they try to launch the application, they face generally people face this type of issues like the Playwright tool is unable to get any executable file, or uh, generally it enables to launch the browser from a desired location. Either you are trying to invoke Chrome or Firefox or Safari, whatever it may be. And this this is similar to both Mac operating system as well as Windows operating system. So from one of your comment, I came to know that in the Windows operating system, you are unable to launch the browser. So I also tried I was trying to make a video from Windows operating system, but since my machine is I made those video, and unfortunately though I unable lost all the recordings there, because that machine is very old. So I am really very sorry to create the video for Windows operating system, but but whatever I saw in that machine, I will tell you here, so that it will be a smooth ride for you for the Windows operating system also. Okay, so let's get started. So first of all, please make sure that you have installed Node.js in your machine. Okay, so go to this website Node.js, and here basically, since you have Windows operating system or any operating system you have, just download that operating system from here. Okay, so since the current machine is Mac, so it is showing for only Mac only. So if I'll go to downloads, it will show you all the executable file. So for your Windows, please click on this installer MSI. It will download that particular exe. So once it gets downloaded, just double click on that exe and go with the default options. Okay, कुछ वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत हमें है नहीं, just make sure click on the next button. Okay, so once you downloaded this Node.js successfully, then we are ready to go. Okay, so now I am assuming that you have installed successfully Node.js. Okay, so how will you, फिर उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे जो मशीन पे Node.js सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया कि नहीं? जस्ट गो टू योर टर्मिनल. ओके, okay, so if you are using Windows, so go to your command prompt cmd. So just search cmd command, so it will appear in the search bar, and then click on that. Okay, so you will get one command prompt window. So there just type node. Okay, so there you will see the node version, like welcome to Node.js v16.15.0. So it indicates कि हमारे सिस्टम पर Node.js application it gets installed successfully. Okay, now we will go to create one. Since we are using VisualStudio, so we are going to create a new project to launch our browser. Okay, so open your VisualStudio. I will create a new project. Okay, and I will create an unit test project and continue. So here one problem is there. Just make sure you are using target framework .NET 6.0. Please make sure.
if you are using either 4.7 or 4.5, something like that, then in that case you will never be able to launch the browser using Playwright, because generally what I have faced in my system, like so basically what happens, अगर हम .NET फ्रेमवर्क 4.7 यूज़ कर रहे हैं और उस पर हम प्लेराइट यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है .NET 4.7 और .NEट 6.0 में डिफरेंस क्या होता है, प्लेराइट जब इंस्टॉल होता है तो इट अपडेट्स आवर प्रोजेक्ट फाइल. व्हाट इज़ प्रोजेक्ट फाइल, आई विल टेल यू. सो बेसिकली वो प्रोजेक्ट फाइल जब अपडेट होता है वो प्लेराइट का जो एक रो बनता है, ठीक है, वो प्लेराइट .NET 6.0 में एक डिफरेंट बनता है और .NET 4.7 में वो एक एंट्री प्रोजेक्ट फाइल में वो डिफरेंट होता है. बट इट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस, बट ड्यू टू दैट डिफरेंट एंट्रीज sometimes we are unable to launch our browser. Okay, so make sure to use our target framework .NET 6.0 while creating a project. So we are going to create an unit test project, then continue .NET 6.0, continue. So I will say Playwright demo. Solution name is also Playwright demo, and I will create one folder. Let's say Playwright demo. Okay, so please make sure wherever in your location, in your machine, please give that location or use the default ones. So I will create this project. Okay, you can see in the desktop I have installed, I have created a folder Playwright demo, and in this folder only I created this Playwright demo solution. Okay, and there is another way to create our .NET project. So just go to, let me create a folder here, name it Playwright console. Okay, so here also so there is one way we have created through the VisualStudio console our project, and I will show you if that is not working in your case due to any reason. Maybe mainly the reason is like .NET 4.7. Just create a folder in a particular location and go to that folder through the command prompt or terminal. This project we have created through our VisualStudio UI. Okay, so basically now we are going to add a Playwright package and then run our code. Just click on your project, right click, and you will see manage NuGet package. Go to here, and in the search there will be three options: browse, install and update. Install will show you all the different packages that has been installed in your project currently. So whenever we are creating an unit project, so the default install packages are this one, all these things which you are seeing. We are going to install a new package. I will browse, search Playwright. Okay, playwright.nm, Microsoft.playwright.nm. So here I will install this one, add package. Click on this add package. If you, in your machine, if it is installed, please click on that button. So it will adding the Microsoft Playwright unit. Let's wait once it successfully add. Okay, now it has been added. How you will see it? Go to the dependencies in the NuGet package
you will see playwright.init. So it has been successfully installed on our machine. So now we have to use that package. Okay, so I will see using Microsoft.playwright. Now we will create the code, we will write the code how to launch a browser. पहले ये लिखते हैं कि playwright dot create async. ओके, सो ये create async क्या करता है, ये बेसिकली हमें प्लेराइट ही हमें प्रोवाइड कर देता है। प्लेराइट एक टूल होता है ना, लंचेस प्लेराइट। जब तक हमें प्लेराइट का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हम प्लेराइट के ऊपर कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो प्लेराइट डॉट क्रिएट एसिंक क्या करता है, ये हमें एक प्लेराइट दे देता है। जैसे सिलेंडर में क्या होता है, न्यू वेब ड्राइवर और न्यू उसका होता है आई वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर और समथिंग व्हाट एवर द ड्राइवर इट वुड बी, न्यू ड्राइवर। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, हम जैसे ही न्यू ड्राइवर उसको बोलते हैं फिर ये हमें एक ब्राउज़र का इंस्टेंस बना के दे देता है, ठीक। और ये ड्राइवर कहाँ पे होता है, ये ड्राइवर सिलेनियम में होता है, सिलेनियम के पैकेज में, ठीक है। तो सिमिलरली व्हाट इट विल डू, ये लाइन क्या करता है, हमें प्लेराइट का एक इंस्टेंस बना के हमें दे देता है। ओके, सो लेट मी स्टोर इट इनसाइड ए वेरिएबल var playwright टूल। ओके, तो क्रिएट एसिंक क्या करता है, ये हमें प्लेराइट एक इंस्टेंस जिसका बना के दे देता है। तो फिर हम ये प्लेराइट टूल को यूज़ करके हम पहले उसका ब्राउज़र इंस्टेंस गेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें ब्राउज़र ओपन करना है। ओके, वो ब्राउज़र इंस्टेंस गेट करना है। जैसे ही हमें ब्राउज़र मिलेगा हम उस ब्राउज़र में एक पेज बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हमें पेज मिल जाएगा उसके बाद हम पेज के जितने भी कंट्रोल्स होंगे उस पेज पे हम उसके ऊपर हमारा एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इफ आई गिव एन एग्जांपल, ओके, सो दिस इज ए क्रोम ब्राउज़र। ओके, सो लेट मी क्लोज ऑल दिस विंडो। सो दिस इज माय क्रोम ब्राउज़र। ओके, सो बेसिकली इफ you'll see this is all my pages. सो इफ आई गो, अगर मुझे कहीं किसी पेज में जाना है या फिर किसी साइट में जाना है, सपोज मैं गूगल टाइप करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये मेरा एक पेज हो गया, ठीक है। और इस पेज पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। ओके, जैसे ये एक कंट्रोल हो गया, अब जो भी दिख रहे हो वो एक कंट्रोल हो गया। जैसे क्रॉस बटन है, यहाँ पे ऑडियो का एक बटन है, सर्च बटन है, सेटिंग्स, मेन्यू, साइन इन बटन, और ये जो एक डिव हो गया, ये आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी जो भी ये इस पेज पे है, इसको हम बोलते हैं पेज कंट्रोल्स। ओके, पेज कंट्रोल्स बोल सकते हैं या फिर पेज एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और ये जो पेज कंट्रोल्स या पेज एलिमेंट्स हुए, हम उनके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सपोज ये गूगल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो उस पेज पे मैं आ जाऊँगा अभी, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्शंस परफॉर्म किया, इस एक्शन को बोलते हैं क्लिक एक्शन। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एक पेज होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक। इस ब्राउज़र के अंदर एक पेज होना चाहिए, और इस पेज के अंदर अगर हमें कहीं पे कुछ क्लिक करना है या फिर कुछ टाइप करना है, यहाँ पे ये सब हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे इस प्लेराइट के थ्रू हम क्या करेंगे, आई एम राइटिंग द स्टेप्स। ओके, प्लेराइट इंस्टेंस गेट करो भाई। ओके, तो प्लेराइट इंस्टेंस क्या करेगा, इट विल हेल्प अस टू क्रिएट वन ब्राउज़र। कोई सा भी ब्राउज़र क्रिएट करेगा वो हमें एक ब्राउज़र का इंस्टेंस दे देगा। ओके, आपके पास जैसे एक ब्राउज़र आया, फिर वो ब्राउज़र के अंदर हमें किसी पेज पे तो नेविगेट करना है, तो गेट पेज, ठीक है।
फिर पेज, जैसे ही आपको पेज मिला फिर आप कुछ भी कर सकते हो उस पेज के अंदर। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स होता है प्लेराइट में, ठीक। तो ये प्लेराइट टूल हमें मिल गया। फिर इसको यूज़ करके हमें किसी का ब्राउज़र का इंस्टेंस हमें गेट करना है। टाइप प्लेराइट टूल डॉट क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, ये ब्राउज़र हो गया। क्रोम ब्राउज़र के लिए हम क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। और क्रोमियम के बाद लॉन्च असिंक, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमें एक ब्राउज़र दे दिया, रिटर्न्स द ब्राउज़र इंस्टेंस। ओके, ये मैंने इसको स्टोर कर देता हूँ ब्राउज़र, ठीक है। ये मुझे प्लेराइट टूल दे दिया। प्लेराइट टूल के थ्रू मुझे ब्राउज़र गेट करना है, और ब्राउज़र के बाद मुझे पेज पे जाना है। पेज में कैसे गेट करूँगा, फिर ब्राउज़र को यूज़ करके ब्राउज़र डॉट पेज, न्यू पेज असिंक। ओके, ये मुझे पेज दे दिया। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, पेज। ओके, ये पेज क्या करता है, हमें इसने ये पेज दे दिया, ये वाला ब्लैंक पेज दे दिया, ठीक है। अब इस ब्लैंक पेज को यूज़ करके हम सपोज गूगल पे जाना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, हम इस पेज को यूज़ करके कर सकते हैं। पेज गो टू https, ये अवेट क्यों यूज़ करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट दिस इज एन ओवरऑल आइडिया हाउ टू लॉन्च ए ऑप्शन, हाउ टू लॉन्च ए ब्राउज़र। ओके, लेट मी रन द कोड। इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इट विल रादर देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट क्लियर पिक्चर। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरा कंट्रोल यहाँ पे अभी पहुँच गया है, ठीक है। बट देयर इज नो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च्ड थ्रू द प्लेराइट टूल। ओके भाई, इसका क्या इस वे कोड तो यहाँ पे पहुँच गया। तो बेसिकली क्या होता है, इट टुक माई, आई वेस्टेड माई होल 1 day to get to know like why it is not launching my browser. I tried with Safari, I tried with Firefox, and also with Chrome. Then came to know that the code is fine, but the default behavior of Playwright is that whenever we are getting the page, okay, तो पेज क्या करता है बेसिकली, जब हम पेज का इंस्टेंस गेट करते हैं, तो जब हम ब्राउज़र लॉन्च होगा तभी तो पेज आएगा, है ना। जब मैं क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करूँगा तभी तो इसको मैं पेज बोलूँगा, ठीक है। तो ये जब लॉन्च होता है, ये बेसिकली न्यू पेज है, इसी लाइन पे ही ये लॉन्च हो जाता है, ठीक है। और लॉन्च ये जब होता है, ये क्या होता है, ये हेडलेस ब्राउज़र में ओपन होता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका ये है, ये ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहीं पे आपको दिखेगा ही नहीं कि क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या, यहाँ पे हमें देना पड़ता है, यहाँ पे हेडलेस इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा। जहाँ पे हम क्रोम का इंस्टेंस हम बनाते हैं उसी टाइम पे, जहाँ पे बनाते हैं उसी टाइम पे ही हमें ये देना पड़ता है, रिटर्न द ब्राउज़र इंस्टेंस। पेज पे नहीं है, ये ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे क्या करना पड़ता है बेसिकली, ब्राउज़र जब लॉन्च होगा, क्रोम जैसे लॉन्च होगा, हम उसको हेडलेस इक्वल टू फॉल्स किए, मतलब ये आपको दिखेगा, अब दिखेगा कि ब्राउज़र लॉन्च हुआ। ओके, सो लेट्स ट्राई इट नाउ।
अब दिखेगा है ना. So it launches the browser, you can see here. Now here we saw that how to launch a browser in our Playwright automation tool. So in here we have used Chrome. If you want to use like Firefox, you can use the Firefox also. If you want to use Safari, you can also use the WebKit also. So this is another way. We just created one project and checked our browser instance. We are able to open the browser instance. Okay. So this project we have created through our VisualStudio UI. So now I will go to CD. Sorry. Here basically we are going to create one project using same project using terminal. Here basically instead of VisualStudio UI, we are going to the terminal and creating the project using .NET 6.0. Please follow with me. Once you have inside that folder, type .NET new NUnit new -n is new, and we are going to Playwright test. Okay, this is our project name. It is now created our project. Okay, this Playwright, and you can see the same unit test 1 using, and this is also created using .NET 6.0. Now I will add Playwright console, then I will move to that project which I have created just now. Inside this project, I have to, how my VisualStudio will get to know that Playwright, I am going to use my Playwright package. So I have to add one package through the console, and then we'll run my automation. We will move to our Playwright console. Sometimes if people unable to create the browser, that is basically due to that versioning issue, like whether you are using .NET 4.7, something like that, because that NuGet package is the issue. So and paste it here on the console. Okay, because through the console what we have done, we just created this folder. We went inside this folder, and there we created one .NET NUnit project, NUnit Playwright test, and there we are adding our Playwright package. Okay, so now the Playwright package has been added. Now I will build the project. Okay, this is the build now. Now I will go inside this project. I will close the console. Okay, I will open this project. Let me copy the initial code which I have written here. Copy, and I will open the solution here. Okay, let me close the VisualStudio. So just open this CS browse file. And then I will add the package. It should, yeah, it gone now. Now let me debug this one. Okay, so it now launches the browser. Let me stop this one. Okay, so basically I showed you how to launch the project either by creating the project through VisualStudio UI. Like if you are going to create the project through VisualStudio UI, make sure to use the framework .NET 6.0, and
You can also create the same project using through our console. Okay, so and one more thing I just want to show, like so this here basically what I have told, like जैसे सिलेनम में हमको वो सिलेनम का डिपेंडेंसीज ब्राउज़र, लाइक क्रोम का एक डिफरेंट ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स का एक डिफरेंट ब्राउज़र होता है सिलेनम के लिए, वो एक सी हमें इंस्टॉल करके सिलेनम को बताना पड़ता है कि भाई तुम मेरा एक सी यहाँ पे है, तुम इसको यूज़ करके अपना ब्राउज़र लॉन्च करो। प्लेराइट कैसे करता है? प्लेराइट के लिए हमें एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये बेसिकली क्या करता है, दिस लाइन playwright.create async। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये इंटरनली जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो इंटरनली इंस्टॉल्स ऑल द डिपेंडेंसीज। ओके, सफारी का, फायरफॉक्स का, क्रोम का, ये तीनों ब्राउज़र का डिपेंडेंसी जितने भी होते हैं ये सब इंस्टॉल कर देता है आपके मशीन पे, इस लाइन पे ही इंस्टॉल कर देता है। और वो इंस्टॉल करके कहाँ पे रखता है, let me go to my terminal। CD कैसे कैसे के अंदर होता है, CD कैसे कैसे के अंदर MS Playwright। If you'll see here, it will install all these browsers here only. This line does all these things. Okay, but in Windows operating system, where it stores, like you have to go to the C folder. Okay, then your machine name folder. Okay, whatever the C users यूज़र्स मशीन फोल्डर। हाँ, यूज़र्स के अंदर आपका जो भी आपका मशीन का नाम होगा उसके अंदर जाइए और यहाँ पे आपका होगा ऐप डाटा। ओके, ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट आपको विजिबल नहीं होगा, आपको एनेबल करना पड़ेगा, एनेबल हिडन फोल्डर। ओके, ये ऐप डाटा जैसे ही आपको विजिबल होगा इसके अंदर होगा लोकल, then MS Playwright। Okay, so this folder will show you, this one is for Windows। okay, इसके अंदर आपके सारे ब्राउजर्स होंगे, but in Mac you have to go to the library, then go to the cache and go to the MS Playwright। and it will show you all the browsers। okay, yeah, that's all। one more thing which I want to say, so suppose in some cases the browsers will be there or the browsers will not be there in due to some reason, any reason, this folder may not contain all the browsers, okay, in Windows or Mac operating system। So go to any location, okay, in your machine, go to any location or terminal, in your command prompt for Windows, type npx playwright install। okay, so it will ask for you package in yes या no install करने के लिए, okay to proceed, just type y and enter। it will install all the dependencies for you। So due to any reason, if you are unable to the Playwright throws you one exception, like unable to get this browser or unable to get packages related to browser, so you can type this command npx playwright install, and this npx, if you have not installed this node.js in your machine, it will throw you, the command prompt will tell you like unable to recognize that command npx। okay, so that's why we have installed that node.js first। okay, and some another thing which generally people
get, like suppose suppose in my MS Playwright folder, what happens, MS Playwright folder, sometimes the folder for the Chrome folder name is 1.0.1059, and your in the error itself it will tell you which folder the Playwright generally uses. Suppose the Playwright is using 1.0.49. Okay, this folder is Playwright using, but this folder is present inside your Playwright folder. So in that case, what you can do, just delete this MS Playwright folder and run the command again, like npx install npx playwright install. So it will reinstall all your dependencies again. Okay, and suppose due to any reason all their dependencies are being present inside this folder only. Okay, and there is a folder mismatch. Suppose the npx like the Playwright is using this folder 1059, and your in your MS Playwright folder this folder is present. Okay, so in that case just rename the folder, it will work in your case. Okay, so that is all. If you have liked the video, please do like and subscribe. Okay, thank you. Go to, if you want to see the project file, what it contains, so we can go to just project, select the project, and then edit project file. So here if you can see, this is the CS pros file, the extension is CS pros. So basically what it will show all the different packages which are generally using in your current project. Okay, so this line, basically this line is different for different versions. This Microsoft Playwright NUnit. Okay, so please make sure we are using .NET version 6.0. Okay, so it will be a smooth for to launch our browser.